Hello all, welcome everyone. Welcome to Odisha Civils. I'm your Ashutosh Sir. जेमती yesterday जेमती हमें discuss करी थले questions ऊपरे आज सेमती जति हमें geography content ऊपरे जोटा कि previous रे हमें बहुत सारा discuss करी regarding the earthquakes. Right आज सेमती हमें start करिवा कि earthquakes volcano पड़ी आज सेमती बहुत interesting, that is your impact of weathering. Right? So कहीं सब्जेक्ट गुड़ा माने डिस्कस करे बिकॉज मु भाबे कि ज्योग्राफी इज एन वेरी इंपोर्टेंट सब्जेक्ट इफ यू सी द सिविल सर्विस एग्जाम्स रे हो ऑन पर्टिकुलर जदि हम देखिबा कि आज का डेट रे जो भी जीएस पेपर बहुत इंपोर्टेंट वेदर इट सिविल सर्विस हो ओपीएससी हो कि यूपीएससी हो कि ओडब्ल्यूएससी रे सब जगह एटा बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट्स बहुत मैटर करे बिना कांसेप्ट रे किछि जिंस हमें कहबा कि हबन बिकॉज कांसेप्ट ही डिसाइड करे कि हमरो केते दूर हमें सब्जेक्ट रे क्वेश्चन तो केमते हमें सॉल्व करिवा दैट इज कांसेप्ट ओनली डिसाइड्स राइट. सो वर्तमान ये जो कांसेप्चुअल जगह कहीं हम भाबे कि फिजिकल ज्योग्राफी जोटा कि वर्तमान फिजिकल ज्योग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट आल्सो वेरी मच इंपोर्टेंट. लेट अस नो तो फर्स्ट ता पूर्व हमें देखिबा कि इंपैक्ट ऑफ वेदरिंग कोन. सो एठी तो हमें देखुचो हला वेदरिंग रो इफेक्ट रे प्रथम जिंस हला कि वेदरिंग एंड एरोजन ऊपर हमें डिस्कस करा. वेदरिंग जदि हमें देखिबा कि वेदरिंग is an breaking down of rocks. जदि हमें प्रथम जानिबा कि वेदरिंग माने को कि breaking down of rocks हुए केमती breaking down of rocks मु कहल that is your weathering, let's say. Okay, breaking down of rocks, that is your weathering, let's say, we can say. केमती हुए कोन एक्चुअली तमे देखुछो एठी ए जदि मैप रे देखुछो एठी बहुत सारा these are the rocks which has eventually got deteriorated. एठी देखुछो तमे ए rocks गुडा सब deteriorate होई जाइछन, right? Deteriorate होई जाइछन. How it possible? Once upon a time गोटे बहुत बड़ा रॉक थिला, नाउ वर्तमान डेटोरेट हेको ओनली वन रेमनेंट इज लिविंग देयर. ओके, सो देखिबा केमती टिके ता पूर्वरु संक्षिप्त रे जानिबा कोन द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डीकंपोजिशन हैला. डिसइंटीग्रेशन एंड डीकंपोजिशन ऑफ रॉक्स इन सितु इज कॉल्ड वेदरिंग. ओके, जस्ट वन सेकंड हैला. सो हमें कोन जानले प्रोसेस ऑफ disintegration and decomposition of rocks in situ is called weathering. It is a static process. मु बुझे भाई जिंसटा राइट. डिसइंटीग्रेशन मु करे डिसइंटीग्रेशन माने भांगी की टिक टिक हेज माने खंड विखंड हेज ताकि डिसइंटीग्रेशंस एंड डिकंपोज माने समथिंग जोटा कि तमरो जदी कहबी जेंति सढी जीवा. डिकंपोज माने सढी जीवा जिंसटा को कहले सढी जीवा जिंसटा. सो इज कॉल्ड वेदरिंग. सो एठी भी सेम प्रोसेस तमे देखुचो हैला ए जो प्रोसेस रे. आ जदी हम डायग्राम भी देखिबा कि दिस इज लुक एट द डायग्राम हियर पिलिंग अप ऑफ द रॉक्स. दिस इज द पिलिंग अप ऑफ द रॉक्स. दिस इज द प्लेस पिलिंग अप द रॉक्स. तमे एटी कोन देखुचो पिल ऑफ माने तमे देखुचो कि जेमति पियाज जो चोपा छोड़ेइले जेमति गोटे छाडी जाय खोलो पा. इट इज जस्ट लाइक लुक एट द सेम हियर. जेमति गोटे पियाज जो चोपा छोड़ौचो इट इज लाइक द सेम थिंग. ए तमे देखुचो चोपा छाडी जाउछ राइट. सो दिस इज द कंसेंट्रिक सेल्स सेमति भांगे. हाउ इट हैपेंस आज हम डिस्कस करिवा हला. ता पूर्व टिके पढी देबा. इट इज ए स्टैटिक प्रोसेस. पुनी देछि कोन इट इज ए स्टैटिक प्रोसेस. स्टैटिक प्रोसेस माने स्टैटिक प्रोसेस माने द सेम प्रोसेस हैपेंस एवरीवेयर. स्टैटिक प्रोसेस माने देयर इज नो मोशन. स्टैटिक माने देयर इज नो मोशन, देयर इज नो मूवमेंट और मोशन राइट. देयर इज नो मूवमेंट. बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी रखो. अंडरस्टैंडिंग द बेसिक जदि हम देखिबा कि बेसिक्स रे कोन नो मोशन और नो मूवमेंट राइट. नो मूवमेंट और नो मोशन. अच्छा नाउ कि मोशन कोन मोशन माने जोटा हमर प्लेट भांगी गळी पड़ला मींस आई मीन व्हाट वी सॉ हियर द डायग्राम फ्रॉम द हियर व्हेन देयर इज एन ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक सरफेस. ओके, जो फिल अप हो जेतले से ब्रेक करी के भांगुची राइट. तो सेटा सही जगह ही पड़ी के रोज. देयर इज नो मोशन अराउंड. आउ इट हैन अ स्टैटिक प्रोसेस. स्टैटिक प्रोसेस इन द सेंस कि सेम प्रोसेस टा इट हैपेंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. माने इंडिया रे ओडिसा रे भी होची पहाड़ भांगुची, इंडिया रे भी अरावली भी भांगुची, हिमालय रे भी भांगुची, नॉर्थ अमेरिका रे कॉन्टिनेंट रे रॉकीज रे भी होची, एंडीज रे भी होची, साउथ अमेरिका रे एल्प्स रे होची, यूरोप रे एवरीवेयर इट हैपेंस. दैट इज व्हाई इट इज स्टैटिक प्रोसेस जगह रे हला. इन सितु एटी मु कहली हला दैट इज योर स्टैटिक प्रोसेस. आउ इन सितु माने इट हैपेंस एवरीवेयर. दिडांग मिसे कहली स्टैटिक प्रोसेस माने देयर इज नो मोशन. इन सितु माने द सेम प्रोसेस
happens occurred everywhere at the same time. अच्छा, second हमें देखिवा weathering causes the disintegration of rock near the surface of the earth. Normally surface of the earth पाकर ही weathering टा हुए, and weathering is breaking down of rocks. खाली तुम एटा भाबनी कि खाली rock हुए, ता संग rock संग कौन हुए, soil also breaking down हुए, soil and mineral as well as wood and artificial materials by contacting atmosphere. कौन contacting atmosphere, water and biological organisms, है water है contacting water, atmosphere, water and biological organisms in the earth रे. एबे जदि हमें देखिबा the process of weathering, जदि हमें देखिबा total ऊपर process of weathering केमति हुए, it has categorized into three major categories. तीनटा major category process of weathering हुए. One is your physical or your mechanical weathering हमें कहबा, then that is your chemical weathering, whatever है chemical weathering, and then biotic or biochemical weathering. जदि हमें ताको segregate करिवा physical or mechanical, chemical and biotic weathering ए हिसाब से segregate करा है. अच्छा, physical वर्तमान जानिबा physical और mechanical weathering, this is the process. Physical mechanical weathering हुए कौन, physical mechanical weathering रे दीटा जिंस बहुत important रहे हैला, पैरामीटर दीटा पैरामीटर मन रखो physical और mechanical weathering रे कि temperature दीटा जिंस पैरामीटर, two parameters plays a major role हैला. physical weathering रे दीटा जिंस रहे, one is your temperature हैला, temperature, and another is your frost action. One by one देखिबा दीटा पैरामीटर मु कहली, two parameters or factors. One is your temperature, one is your frost action. Temperature जदि मु कहबी, temperature रे कोन हुए, जदि हम एटी देखुचंती tropics region, धर हम एटी देली, this is the tropic region, this is the, let's say this is the equator, and this is the tropic region, this is torrid zone or tropical zone, let's say tropical area. Tropical area रे normally कोन हुए, दिनो बेला कौन हुए, your the solid surface get heated rapidly solid surface टा गरम ही जाए हैला, rapidly solid surface get rapidly during daytime. So daytime रे कौन लिखली मु, daytime रे what happens, solid surface get heated rapidly, right. Solid surface एटा conduction process जो को medium रे, because of conduction process due to conduction process माने heating medium, conduction process, okay, rapid heating and cooling, ठीक अछि, rapid heating and cooling takes place, rapid heating and cooling takes place. केमति हुए, दिनो बेला तमे देखिबो कोन हुए, rapid heating दिनो बेला टेम्परेचर अधिक सो जल्दी गरम हो जाय, राती बेला टेम्परेचर ड्रॉप करे सेटा टेम्परेचर कोन होबे ठंडा हो जाय, that is rapid heating and cooling. That is why I said conduction mechanism सब बड़े मन रखियो, conduction is the major factor. फिजिक्स रे हम कम पढो हैला, ए हमें कि जदी हमें देखियो कोनोसी थर्मल ऑब्जेक्ट हैला, जदी हमें देखियो कि योर फिजिकल केमिस्ट्री रे कोनोसी थर्मल ऑब्जेक्ट जदी तुरंत गरम हो माने इफ यू टच अनदर एंड, गोटे एंड रे तुम गरम करो, बिकॉज ऑफ द कंडक्शन प्रोसेस सॉलिड बॉडी रे कोन हीट टा ट्रांसफर हुए. एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंस इन योर सॉलिड बॉडी इन केस हैला, सॉलिड बॉडी रे. अच्छा, वर्तमान देखिबा पुनी सॉलिड बॉडी रे पुनी कोन हेची, राइट. सो नॉर्मली छोटी हमें जानले कंडक्शन प्रोसेस रे, तो पुनी राती बेला ठंडा हे गेला, हमें जानि छन दिनो बेला माने कोन हला, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन. सो प्रोसेस कोन रहला एडी जदी हम देखिबा, एक्सपेंशन हैपेंस तमाने expansion occurs in daytime रे रहला, expansion हला कोबे daytime रे, night time रे कोन हला contraction हला, contraction in night time रे. So expansion contraction दीटा हला, expansion दिनो बेला expand करी गेला, राती रे contract कला, बार बार जेतले when this process repeats हला, if you know when this process repeats, it exert a pressure on the wall, on the wall of the rock. So kon hobo, eventually the rock surface getting weakened, weak padi jibo, eventually the rock surface get weakened and eta kon hobo bhangi ki goli padi, right. Eventually
it the rock surface get weakened and it breakdowns भांगी की तले गले पड़ियो. That is what it is known as your temperature. जदि हम देखिबा temperature plays a role in खास करी को जगह हुए tropical and subtropical areas. ये जो जिनसटा हुए breaking down of rocks, spilling of rocks, mostly it occurs in the tropical and subtropical areas. जो spilling of rock plates कोड हुए arid or semi-arid, tropical and subtropical areas. माने को जगह रे ट्रॉपिकल सबट्रॉपिकल माने 0 रो इक्वेटर 30 डिग्री नॉर्थ आउ 30 डिग्री साउथ रे एटा हुए मन रखिता टेंपरेचर टा रहा हला. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट मन रख. नाउ कम टू द सेकंड थिंग, फ्रॉस्ट एक्शन. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन हला ए पार्ट. सेकंड पार्ट जदी हम देखिबा, नाउ लुक एट हियर फ्रीज थॉ एक्शन, राइट. एडमु कम कहली फ्रीज थॉ एक्शन, ठीक अछि. फ्रीज थॉ एक्शन जनरली कोड हुए जदि हम देखिबा टेम्परेट लैटिट्यूड रे हला. टेम्परेट लैटिट्यूड फ्रीज थॉ एक्शन नॉर्मली इट ऑकर्स इन जदि देखिबो कि इट ऑकर्स इन योर हायर लैटिट्यूड. हायर लैटिट्यूड माने फ्रीज थॉ एक्शन, लेट्स से फ्रीज आउ थॉ. थॉ माने कोन रहबो, इट इज योर मेल्टिंग, इट इज योर मेल्टिंग. थॉ माने इट इज योर मेल्टिंग. जदि फॉर एग्जांपल्स जदि अछि एटलास रे में देखिबा को कंट्री, द कंट्री लाइक जदि मु लिखिबी इफ आई से वर्ल्ड पॉलिटिकल जदि अछि खोलो, जदि मु देखिबी यूरोप, लेट्स से गो टू द यूरोप. यूरोप रे माने 45 डिग्री अबव जदि हम जिबा, इफ यू गो टू द 45 डिग्री अबव latitude or let's say 50 degree above latitude, like your countries like your Europe रे let's say your जदि मु देखिबी or particularly let's say Sweden, Finland, your Norway, ए कंट्री गुडा कर जब तुम देखिबो कोन हुए सेठी भी ब्रेकिंग डाउन रॉक हुए, रॉक ब्रेक डाउन हुए. हाउ केमती कोन हुए, देयर इज एन भला भी सुनो रॉक कैविटी. जदि मु पहाड़ बनेली माने बेसिकली टेम्परेट रीजन्स रे हला, टेम्परेट रीजन्स हला, टेम्परेट रीजन्स ए जगह रे हुए हला, टेम्परेट रीजन्स रे हुए वेयर सूर्य का किरण टा कोन हुए ए जगह तुम ऑब्लिक रेज पड़े, माने देयर इज नो डायरेक्ट सनरेज एक्टिंग, ऑब्लिक रे पड़े. सो कोन हबो योर हिटिंग. जदि हम देखिबा कि दिस इज योर लेट्स से पहाड़ अछि, माने आई मीन देयर इज एन माउंटेन, माउंटेन रे पहाड़ रे एटा सब कैविटी, दिस आर द कैविटीज. ओके, दिस आर द cavities, let's say cavities in a rock, ठीक अछि. cavities in a rock basically, right. cavities in a rock, rock रे cavities असला. so कोन हबो दिन ए जो cavity रहला दिन बेला कोन हबो, ओके. the water, suppose your moisture अछि, माने I mean your water collection अछि, माने I mean there is an water availability in your atmosphere. How ए जो cavity रे let's say water collected in this cavity. again कोन हबो नाइट टाइम रे कोन हबो एटा फ्रीज हे जो because temperature drop कला during night time हला. नाइट टाइम रे कोन हबो, नाइट टाइम रे temperature drops कला, drop कला. ओके, वो जगह हम कहली हायर लैटिट्यूड, हायर लैटिट्यूड्स. हाई लैटिट्यूड माने को एरिया मुनेली, हाई लैटिट्यूड माने योर 45 डिग्री, माने 45 डिग्री बियॉन्ड ऊपर को 45 डिग्री नॉर्थ एटा हला इक्वेटर, एटी हला 45 डिग्री साउथ, राइट. तार टेम्परेचर योर ड्रॉप कला, राइट. सो कोन हबो टेम्परेचर ड्रॉप कला माने कोन हबो पुनी टाइट हे गेला, इट टाइटन माने फ्रीज हे गेला. again during day time पुनी कोन ला, during day time there is an melt, पुनी मेल्ट कला. during day time it melts, पुनी मेल्ट हला. so मेल्ट हले कोन हबो पुनी again हायर लैटिट्यूड रे. so बार बार डे टाइम रे मेल्ट हला, नाइट टाइम रे पुनी सेटा कोन हला टाइट हे गेला, मींस आई मीन कॉन्ट्रैक्ट. दैट मींस during day time it is expansion, नाइट टाइम रे again contract. so बार बार एंती हले कोन हबो, it exerts a pressure on the rock wall. अच्छा, तापर सेकंड स्टेज रे कोन हो, यार पर स्टेज ता सेकंड स्टेज रे कोन रहइबो, वाइडनिंग ऑफ द क्रैक ता वाइड हो. तमे निजे देखो बार बार कोन हला त माने तार जो माने ओपनिंग ता सेटा आहुरी क्रैक ता डेवलप्स कला. एटी हम कोन लिखली क्रैक वाइडनिंग, एटी लिखली वाइडनिंग
widening of the cracks, widening of the cracks, this is there. So bar jitale hela cracks ta widen hela, so what happened, it pressurize the rock wall पे टा pressurize कर, it puts an pressure on the rock wall, right? Rock wall एटा कौन कला बार बार pressure पकेला, it puts an exerts an pressure on the rock wall. So what happens, eventually जितने rock wall ऊपर pressure पकेला हैला, जितने rock pressure पकेला, then it again सेटा भांगी की कौन हैला, it again tear off the total rock जोटा अच्छी सेटा एमती मझिरू एटा पूरा कटिगा, and there is an rock टा जो rock surface टा total it is माने ए जो cavity totally break कर जो, so that is why again disintegration of the rocks takes place, that is what. आ इटा हेला कोठी, again it is an temperate region, ता माने जेतले कि नॉर्वे बुलिया को जीवो मन पको नाही सार कहउतले यूरोप रे ए जिंसो कोडा एमथि हुए, मन रखो जेहेतु इंसोलेशन सनरेज कम पड़े हैला, तो दैट इज व्हाई बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस हैला, दिस प्रोसेस ए जिंसोटा रहे, सनरेज कम पड़े बिकॉज ऑफ जो भी टेम्परेचर अवेलेबिलिटी हुए, इट इज फ्रीज थो एक्शन, फ्रीज थो माने दिन बेला फ्रीज हे जिवो हैला, सॉरी दिन बेला मेल्ट करियो राति रे फ्रीज हे जिवो, बार बार हेले गोटे स्ट्रेस डेवलप हुए रॉक वॉल, डिटेल रे होई जिंसो गोटा क्लास रे हम आउरी डिटेल जिंसो डिस्कस हुए, बट एटी टोटल सरफेस आइडियाज गुडा मु दोउची, ठीक है, आहुरी मु अनाउंसमेंट भी करिवे और जिंसो आगु को देखिबा। पुनी फिजिकल वेदरिंग हम जानले, नाउ लुक एट द केमिकल वेदरिंग, एटा हम सारले, नाउ लुक एट द केमिकल वेदरिंग, कौन देखिबा, व्हाट डू यू मीन बाय द केमिकल वेदरिंग, लेट्स से केमिकल वेदरिंग जो प्रोसेस रे हैला, वेदरिंग मन को सबुठी इंपोर्टेंट चैप्टर मत लागे, जहां भी किछि अर्थ रे होची वेदरिंग रो प्रोसेस जोटी हम देखिबा हैला, प्रोसेस ता भीतर सबुठु जदी वाइटल देखिबा इट इज योर केमिकल वेदरिंग, राइट, माने आई मीन वेदरिंग प्रोसेस रो जदी हम देखिबा कि पूरा वाइटल फिजिकल और केमिकल वेदरिंग बहुत इंपोर्टेंट हैला, दीटा अंक केमिकल वेदरिंग प्राय माटी तळे बेसी हुए हैला, बायोटिक वेदरिंग सबुठे माने वेदरिंग प्रोसेस टा ही बहुत इंपोर्टेंट, बट फिजिकल टा मन रखो माटी ऊपर, केमिकल टा प्राय तो एक्टिव रहे माटी तले, माने नो माटी ऊपर हुए नहीं, माटी ऊपर भी हुए माने द रॉक सरफेस ऊपर, बट योर माटी तले मींस आई मीन योर बियॉन्ड द सरफेस माने बिलो द सरफेस, बीनीथ द सरफेस एटा बेसी हुए। अच्छा वर्तमान देखिबा व्हाट डू वी मीन बाय द केमिकल वेदरिंग, सम रॉक्स डिकम्पोज हैला, किछि रॉक्स डिकम्पोज होंती व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विथ, जितले से माने कांटेक्ट आछन, कम इन कांटेक्ट विथ योर वाटर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैला, वाटर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इवन some minerals in rocks undergoes chemical changes, किछि मिनरल कोन होंती, they undergo some chemical changes, right, changes when they come in contact with water and air, जेतले से माने वाटर और एयर संगे कांटेक्ट रे आसंती से माने किछि केमिकल चेंज हे जान, they go for some few chemical changes when they come in contact with your हैला, they undergo some changes when they come in contact with air and water, जानिबा आगु कौन होची, जस्ट लुक एट द मैप हियर, सेठी हम जानले कि हु आर द मेजर कल्प्रिट इन द केमिकल वेदरिंग, वाटर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जस्ट लुक एट द मैप हियर, तमे कौन देखला, केमिकल वेदरिंग वीकेंस द जॉइंट्स इन रॉक्स, केमिकल वेदरिंग कौन करछि, वीकेंस द जॉइंट्स इन रॉक्स, जस्ट लुक एट हियर, chemical weathering, just look at here, this is chemical weathering, right, chemical weathering, this is the chemical weathering, just look at here, एटी कौन होची तमे देखुछ, there is an weakening in the joints, just look at here, weakening होची एटी, just look at weakening, you know, there is an removal of minerals, एटी देखला हमें removal of minerals, देखुछ एटी तमे देखो removal of minerals, this is the removal of minerals, ये the removal of minerals होची, just look at here, right, हैला, removal of minerals, just look at here, ए जगह भी mineral remove होची, this is the mineral remove, right, next, so एटा कौन होची, ता माने एठी हम जानले the decompose into contact with water, carbon dioxide, okay, some minerals in rock undergoes chemical changes when they come in contact with oil, so एठी कौन rock टा decompose हे गेला, decompose माने सड़ी जीवा, नॉर्मली हम जेटा को सड़ी जाए कि एटा से जगह रे माने आइदर मिनरल रिमूव हे गेला और द रॉक रे जो हार्डनेस ता सेटा कोन हे गेला, एटा रिड्यूस करि गेला, दैट इज व्हाट यू कैन सी हियर। आ गुटे डायग्राम पुनी देखौची, जस्ट लुक एट हियर,
Just look at the diagram here. Here we saw it is a rusting. कौन हमें देखले rusting of iron. इट में लिखी हुई this is your rusting of iron. कौन लिखले हमें rusting of iron. Right? This is your rusting of iron. Just look at the diagram here. Rusting of iron. तमन देखो जो this is an गोटे लुहार this is just like an just iron ro जदि देखो iron chain and this iron chain eventually it is corroded. This is corrosion takes place. एटी कौन लिखली corrosion. Okay, corrosion takes place. ठीक है जी corrosion takes place. Just look at here corrosion ହେଇଛି. Eventually what happens এই corrosion जोटा हैला एटा धीरे धीरे भांगी जाय. This is corrosion. Okay, corrosion हम लिखले corrosion. This is also corrosion. Right? Corrosion एटी कलंकी जोटा कि हम ओडिया रे को कलंकी लागि जायछि. कलंकी लागि जायछि पुनी एतरे मारियो पूरा भांगी एटा गळि पड़ी. This is just look at the map. This is the rusting of iron. This is all again the process of oxidation. एटी को काम करे chemical reaction होछि. एटी iron संगे कोन होछि iron Fe ठीक अछि iron Fe plus oxygen Fe2 plus oxygen हैला तो एटी कोन रुए Fe2O3 एटी फॉर्मेशन होछि ठीक अछि iron oxides oxidation process रे एटी हम देखिबा जदी iron और oxygen react करचंदी सॉरी iron और oxygen एटी reactions करचंदी तो FeO minus होछि ठीक अछि और it is an oxidation process. एटी जो होछि रस्टिंग होछि ऑक्सीडेशन प्रोसेस रे. सो एठी हम कोन देखिले कि आयरन भलिया मेटल इत्ते बड़ो मेटल इटा भी रस्ट हे होछि आयरन भलिया मेटल. राइट ओके आयरन भलिया मेटल. थैंक यू प्रणेंदु. हला हम देखले कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस रे इटा आयरन भलिया मेटल टा रिड्यूस करि जाउछि माने such an chemical weathering how powerful it is. Okay, so it is become oxidation. Because of the oxidation process it is got rusted. So it here maybe aguta ita dekhile already कि how the chemical weathering it got weakened, rocks are getting weakened because of the this chemical weathering. It is mineral guda सब remove ही होछि. Now I mean ita बुझिले. Now come to the another इटी कोन देखिले कि we have completed physical weathering सारले, chemical weathering सारले. Now come to the biotic weathering, biotic or biochemical weathering. This is very interesting to know. So weathering process रे कोन होछि हम जानले कि process of disintegration rock जो भांगी गळि पड़छि. even if तमे जो देखुछो बड़ जो river, suppose I am talking about the महानदी जदि जगतसिंहपुर केंद्रापड़ा रे आनी कि जमा करूची हैला कोन बोल्डर हो कि तोर सैंड सिल्ट हो तो कोठो आणला सेटा from where it brings ए weathering process रे छत्तीसगढ़ पहाड़ माइकल रेंजेस से नहीं किया सूची. Even if I say the Ganga and Brahmaputra, they come with the boulder sand silt and deposited in the Sundarban Delta because of this weathering process. ए weathering process जोगु ही समाने भांगी के आनी के ऊपर मुंडरू हिमालय रू पहाड़ आनी जमा करचंदी कि महानदी हमरा आणुची कोठु छत्तीसगढ़ र माइकल रेंज. That is what very important बुझो बहुत important बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर एगुडा सब. राइट वर्तमान देखिए बायोटिक वेदरिंग रे just look at the map. एटी तमे कोन देखुछो बायोटिक वेदरिंग. जस्ट लुक एट हियर तमे देखुछो एटी गोटे पहाड़ अछि आ पहाड़ रे गुड इवनिंग ओके. सो दिस इज द गोटे पहाड़ देखुछो पहाड़ रे तमे कोन देखुछो व्हाट यू देखुछो कि पहाड़ भितर माने देयर इज सम some plants जेंति इट लुक्स लाइक as if somebody has planted here. It's not like that one. Okay, it is देखुछो there is a growth of plantation. If I say that there is a growth of plantation, right? Growth of plantation. This is the growth of plantation. But to be very realistic, these are the process of these are the process of your physical weathering promotes this biotic weathering. How? काहेकि ना rock eventually rock टा कोन एटी देखुछो there is a gap. Okay, disintegrate ହେଇछि. ये जो फांकर when there is a seed germinate pollination process जेतले seed पड़े then that is an it allows the growth of trees or plant. So eventually what happens दीटा जगह काम करता हम देखतो गोटे माने कोनोसी कॉलेज बिल्डिंग तमे देखितो पुराना कॉलेज बिल्डिंग रे गोटे बर गछ उठी थाए कि गोटे ओस्त गछ उठी थाए 10 वर्ष पर आउथरे देखिबो से बिल्डिंग टा भांगी कि पूरा जेमति गोटे हॉन्टेड हाउस हे. How it process because of this biotic weathering.
let us know few lines of this, right? Detail re class re din sort of total analysis हुए हला तापर मैं announcement करिबे आउट परे. Usually the roots of the plant, basically roots of the plants, especially trees, can force apart the joints and cracks. जदि हम usually हम देखिबा बायोटिक वेदिंग रे कोन करे, usually the roots of the plant रो roots, especially tree, can force apart the joints and crack, joints crack को फटे दिए, right? Living organisms also contribute करंती chemical weathering कोन to the process of weathering. एटा मु ए पार्ट को मु आसु living organism बतवन को roots of the plant, especially trees, can force apart joints and cracks, but how it possible? माने रूट रो जदि मु एटी देखुची हैला, सपोज मु एटी गोटे डायग्राम करची भला भाबे देखो, आई एम जस्ट मेकिंग एन डायग्राम. एटी गछर रूट कहली हैला, ओके गछर कहली एटी ठीक अछि. दिस इज एन ट्री, लेट्स से दिस इज एन ट्री. ए रूट टा गला एटी हला रूट कैप, वी नो दिस इज रूट कैप, राइट? दिस इज रूट कैप. मोर तमन समस्त क्वेश्चन हला कोन रूट कैप रो इते पावरफुल कि गोटे पहाड़ माने बड़ बड़ ग्रेनाइटिक पहाड़ कि बड़ बड़ जदि हम देखिबा कि लाभार पत्थर को भांगी कि चूना कर दो, इज इट बिकॉज ऑफ द रूट कैप और समथिंग एल्स? आउ किछि हु कैन से? यस, एनीवन कैन से. इज इट ड्यू टू द रूट कैप that it disintegrates the rock, माने develops the crack joints and cracks of the rock? आउ कोन हे पारे, की कहि पारि? यस, एनीवन कैन से? यस, जदि हमें देखिबा it is the chemicals secreted by the root. Normally कौन हुए, any plant हैला, any plant they secrete, plant रो root माने एटी मु लिखुची plant roots हैला, plant roots secrete हैला, secrete chemicals हैला, secretes chemicals कौन, and this chemical is responsible for okay decompose or loosening or removal of rock minerals. This is the clear fundamental. हला, chemicals किछि रिलीज करंती और सेही chemical टा ही तमरो रिमूव करे. से chemical ना कोन जानि छ? That chemical name is this chemical हला, ए जो chemical root रु बाहरे सेडला तमरो humic acid. Please make a note, humic acid, right? Humic acid is the chemical. Humic acid जो root रु secrete हुए सेटा ही तमरो chemical टा कोन करे, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज समस्त से रिमूव कर दो. ओके, दैट इज व्हाट रो बिल्डिंग टा फाटी जाए. ओके, बिल्डिंग टा कोन वीकनिंग ही जाए, दैट इज काइंड ना रिमूवल ऑफ द मिनरल्स थाए. दैट इज व्हाट तुम एटी देखो, ए जो रॉक टा जो फाटी छि बिकॉज़ ऑफ द मिनरल रिमूव होई छि, दैट इज अ रिमूवल ऑफ द मिनरल, दैट इज व्हाट द वीकनिंग ऑफ द रॉक्स. वर्तमान बुझी हला, इज इट क्लियर? नेक्स्ट तुम यदि देखु छ हला, तुम एटी देखो तापर हम कोन लिखि छि, again living organisms like can also contribute. Living organism भी समाने contribute to the process of weathering in many ways. किछि living organism भी अछंती, they also contribute in the process of weathering. Living organism के living organisms जदि हम देखिबा, biological weathering is the process that plants, animals, bacteria break down the rocks in smaller pieces. Also खाली plant no, living organisms माने हम कहबी burrowing animals. Suppose let's say burrowing animals, का कहबा burrowing animals, right? Burrowing animals का कहबा, burrowing animals like your rabbit, right? खाली rabbit हमें कहि परिबा burrowing animals रे. rabbit मु कहली के burrowing animals रे, rabbit, wild dog हैला, wild dog ए माने कोन जो माने खोली की से माने सुवंती हैला. burrowing animals का कहबा, those जो माने करंती, okay, they dig and they generate tunnel करी ता भीतर रहंती हैला. rabbit का में कहि परिबा, wild dog कहि परिबा, wild dog हैला, ए माने हमें कहि परिबा. और some squirrel ए माने कोन कोन ए माने भी इम्पैक्ट करंती, तांको नख खुरा रे से माने जो खोलंती, that also impacted, okay, impact on the rock surface, and eventually it is a very slow process, but they do have considerable impact
of weakening the rock surface. That is what I am saying कि living organisms, even if तमे जानि earthworm माने जिया जोटा हमको earthworm, they also have impact. earthworm जो excreta करे सेथरे भी chemicals थाए. देखो आम ह्यूमन भी आमे भी एक्सक्रीटा करू सेथरे भी केमिकल्स थाए. से केमिकल्स गुडा कोन करे धीरे धीरे रॉक सरफेस को वीक करे. दो इट इज अ वेरी वेरी माने स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस, किंतु एटार इंपैक्ट थाए. राइट आम बॉडी रे भी तो एसिड अछि ना, सेमति जीवजंतु माने जो नेचर जो बनेछि सेथरे भी एसिड्स अछि तांकर हैला. सो दे डू हैव कंसीडरेबल इंपैक्ट on weakening of the rock surface because of the secretion of the chemicals, right? Yes, good evening Kanan, good evening. Okay, well also, so I hope all are fine. So these are the process of biotic weathering that eventually weakening the rock surface. Okay, rock surface to weaken करे, and even if small bacteria, even if छोटो bacteria, fungi, okay, bacteria ये माने ही also से माने break down करते rocks in the smaller pieces. छोटो piece से माने कर दियंते rock, right? That is what बुझिएला. ठीक अछि, वर्तमान गुडा अनाउंसमेंट करबी कि बैचेस ऑलरेडी जब देखिबा जनरल स्टडी जीएस बैच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड हैला. ऑलरेडी जीएस बैच ऑफलाइन बैच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड जीएस रा. ओके, आ सेमती जीएस बैच पर ऑप्शनल बैच ऑलरेडी ऑफलाइन बैच ऑलरेडी स्टार्ट होइछ लास्ट 4 इयर्स हो हमर ओडिशा सिविल्स से दिया होछ ऑफलाइन बैच रा. ओके, यूपीएससी ओपीएससी में ऑनलाइन बैच आल्सो स्टार्टेड. ओके, लास्ट मंथ रे आरंभ होइछ ऑनलाइन बैचेस. दोज हु want to enroll, they can directly contact me 7978090972 रे. You can all can contact a number रे. ठीक अछि, WhatsApp you will be go for the WhatsApp also is there also, right? Mains test series also started, GS ro mains test series also started, and also your optional ro bhi. Okay, geography optional au यार भी test series start हिची दिटा अंक हैला. optional हो कि GS रो प्लस सबुठ वाइटल मु जदी कहबी कि ऑप्शनल इज ज्योग्राफी ऑप्शनल इज वेरी इंपोर्टेंट बिकॉज स्कोरिंग पेपर आउ देयर आर लॉट्स ऑफ माय सक्सेसफुल स्टूडेंट्स जो माने 10-12 वर्ष भीतर बहुत सारा से माने भलो स्कोर आनछन. इवन मोर जदी मु कहबी टॉप 20s रे बहुत अछंती. एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल बहुत इजी स्कोरिंग भी बिकॉज ऑफ स्कोरिंग. खाली देखो हमकु भल लागे मु सबले कहबी ऑप्शनल सेटा चूज कर जोटा कि खाली एटा नो कि मते एटा भल लागे. नो, स्कोरिंग भी देखिया पड़े. यू हैव टू बी इंटेलिजेंट व्हाइल सिलेक्टिंग दैट वन, right? So I would suggest जो माने भी जाओ they can connect me over this on WhatsApp, right? And GS batch also there is our team is there. They can guide you. जोटा कि offline already started from the last 2 months ago. Already GS batch has started. Those who want to enroll, they can connect me over this number, right? ठीक अछि. Test series also start from 6-7 test series has already जोटा completed है GS रो हो कि optional रो हो. ठीक अछि. Okay, so आज पे एतिकी we'll meet again. Okay, we'll meet again. So आज पे एतिकी any further एई बुढा टॉपिक जो देली हैला ए जो टॉपिक रे हम डिस्कस करले पुनी मु आसीबे और इंपोर्टेंट टॉपिक नै जिन द वेदरिंग रो जेमते इंपोर्टेंट रहिला हम जानले रिलेवेंसी वेदरिंग केते इंपोर्टेंट सब्जेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग रे आउ डिटेल्स रे क्लास रे एक्सरसाइज संगरे इसु जिंसो डिस्कस हुए. Okay, so hope this you all have enjoyed this sessions. We'll meet again in the next jemti ame gote rituals maintain korche, question answer kariba, content kariba, optional la kichu mu debi hela sei bhaliya hisab re we'll again continue our sessions. Okay, till then ठीक अछि ताले. Thank you so much. We'll meet again. Any queries, let me know. कार किछु queries अछि, they can ask. Any queries पचारि परिबो. Okay, any queries? Okay, right? ठीक अछि ताले. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you for all your patience. Keep watching. Stay healthy. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you. Take care. Bye bye. Thank you.